we start this bulletin, we continue with the story that we're tracking, the biggest story from Uttar Pradesh, where the Bahraich accused Sarfaraz has been shot. We learned that both accused have been taken into custody and have been shifted to the hospital. That's the latest that's coming in from Uttar Pradesh. Remember, Bahraich violence, communal riots had taken place after Ramgopal was shot, and the people who shot Ramgopal have been taken into custody. They were shot at. There were two accused. They have been shot at. They have been taken into custody then after and have been hospitalized. I have my colleagues Madhurima and Vaibhav on ground joining us live from ground zero. Madhurima from the newsroom. Let's see if we can toss across to them from newsroom and ground zero. Madhurima, if you can hear me. Madhurima will be joining us in just about 30 seconds. We'll see if we can get Vaibhav Mishra, our colleague from our sister channel Republic Bharat, who is on ground zero from Bahraich, reporting live, getting you all the ground updates. We'll see if we can go across to them. Remember, viewers, this is the biggest story that we have coming in at this hour, where the accused in the Bahraich violence have been shot dead. Sarfaraz alias Rinku has been shot, and we learn that he has been hospitalized. He's been taken into custody. Remember, what we know so far is that two people have been taken into custody. That's the latest coming in. We're trying to get across through our reporters who are on ground zero in Bahraich. We're also trying to go across to Madhurima, who's joining us live from the newsroom. Remember, this encounter just took place a short while back. Visuals on your screen show how the accused was shot at by the cops in Bahraich. He was trying to flee to Nepal is the latest input that we have. That's the latest coming in, and we'll try to get you more details on the same. Remember, Bahraich violence that took place just few weeks back. The main accused of that violence who shot Ramgopal Mishra, who is on the left of your screens, he was the victim. He was shot dead. The accused who shot dead Ramgopal has now been shot at by the UP police. An encounter broke out, and this happened while he was trying to flee to Nepal, is what we know. Okay, let's listen into the video. Let's get that night up and listen in to that video that's coming across. Okay, we have Madhurima joining us live from the newsroom. Madhurima, it's a big development that's coming in from Uttar Pradesh. What more details do you have on the case? Well, what we're learning at the moment is that the police have rushed both the accused who were in the custody to the nearby hospital. This is what we're learning from our sources in the Bahraich police for the medical treatment. But remember that this particular encounter took place when the UP police got hold of these two accused, and they were trying to flee from the spot. They were trying to flee to Nepal to save their lives. But remember that this case had sent shockwaves across the state and had put a big question mark on the law and order situation in the state of Uttar Pradesh, that has been bragging very stern action against criminals. And we saw that how on Monday angry mob went mad on the roads of Bahraich, where people went on and set ablaze multiple houses. There were multiple vehicles that were vandalized on the roads of Bahraich. The Uttar Pradesh government was forced to rush
their most senior officials on the spot to take cognizance of the matter and bring the situation under control, following which we heard how the broken-hearted family kept on asking for justice on the streets of Bahraich while speaking to media as well. Extensive coverage from Republic TV showed their voices to the government as to how they were only crying for justice. Gopal, who was brutally killed, the 22-year-old man had just gotten married a couple of months back, and what was more worrisome in this entire matter was the gory details of the post-mortem. That also was one of the reasons behind the massive unrest on the roads of Bahraich. The post-mortem report unraveled the gory details, the way he was killed. His nails were pulled out, there were bite marks, his neck was throttled, and he had suffered for a very long time before he succumbed to his injuries. So after that, we saw the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath coming into the picture and meeting the family of the victim, and now what is being said is that the justice is being done, but we'll have to wait and watch as to what really happens. What we're learning at the moment is that these exclusive visuals that we are putting for viewers in that the two accused were trying to flee the spot. They were trying to flee the country when this particular encounter broke out, and they were shot at, and after that the UP police, the Bahraich police, rushed them to the nearby hospital. That is what we are learning at the moment. Back to studios. Right. Thank you, Madhurima. We'll keep coming back to you on that updates. I have Raghavendra also joining me live on the broadcast. Raghavendra, आप वहाँ थे जब बहराइच में ये कम्युनल राइट्स हुए थे, आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स फाइल किए हैं. आज जो अक्यूज्ड है वो उसको यूपी पुलिस ने दे हैव शॉट एट हिम. आप बताइए जो टाइमलाइन था, किस तरीके से यूपी पुलिस ने ये कदम उठाया और क्यों ये कदम उठाया? व्हाट इज द टाइमलाइन दैट वी नो सो फार? अब बिल्कुल देखिए, टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो जो पीड़ित परिवार था, यानी कि जो रामगोपाल मिश्रा का परिवार था, बहुत ही गरीब और बहुत ही सामान्य परिवार था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार नहीं था. उसको अपनी डिमांड भी रखनी नहीं आती थी. एक ही बात थी कि जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसे आरोपियों के साथ हो. वो वही बात बहराइच में भी बोला था, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो यही बात पीड़ित की पत्नी ने कहा, यानी कि जो विधवा पत्नी है, 2 महीने पहले शादी हुई, 3 महीने पहले शादी हुई, एक ही बात, खून का बदला खून. जिस तरह से परिवार रोने लगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे इमोशनल हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये सख्त कार्रवाई होगी, कि उत्तर प्रदेश देखेगा कि ऐसे स्थिति में कभी भी किसी के पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं डालेगा. उसके बाद सक्रियता बढ़ी, एटीएस लग गई वहां पर, एसटीएफ लग गई, कई टीमें वहां पर काम कर रही थी, अलग अलग मोर्चों पे नेपाल से लेकर बहराइच तक टीमें काम कर रही थी कि आखिर मुख्य आरोपी 4 दिन हो गया तो कहां भाग सकता था. हत्या से लेकर आज तक 5वां दिन है, लेकिन दबाव बढ़ गया था. कल रिपब्लिक भारत ने हत्यारोपी यानी कि जो सरफराज है उर्फ रिंकू, उसकी फोटो रिलीज की थी. किस तरह से उसकी फोटो आई तो एसटीएफ के ऊपर और दबाव बढ़ गया कि इसका तो अब तो पहचान भी उजागर हो गया है. ऐसे में एटीएस जो है अपने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, अपने जो कुशल नेतृत्व का यूज करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन ले रहा था. चूंकि एसटीएफ का काम करने का तरीका अलग है, एटीएस का काम करने का तरीका अलग है. उत्तर प्रदेश पुलिस बैकिंग दे रही थी. लगातार नेपाल से लेकर फोनों को खंगाला जा रहा था, बहराइच से लेकर उनके रिश्तेदारों का, उनके लोगों का. ऐसे करके एसटीएफ ने अपनी कुशलता को भांपते हुए चारों तरफ उसने लगा दिया था अपनी टीम को. कई टीमें काम कर रही थी. ऐसे में हरदी क्षेत्र के निकट नानपारा रोड पे उसको आज दोपहर में घेरा गया. वो निकल रहा था, नेपाल भागने की फिराक में था अपने सहयोगी के साथ. ऐसे में जो जाबाज जो पुलिस के जो कमांडोज थे, जो एसटीएफ के जो जवान हैं, उन्होंने एक सटीक घेराबंदी की और वो निकलने की कोशिश करता है. ऐसे में मुठभेड़ होता है. चूंकि सरफराज बहुत सातिर है, आपने देखा होगा कितनी गोली, जब गोलियां मारी कितने छर्रे रामगोपाल मिश्रा के शरीर में पाए गए. पोस्टमार्टम में यह निकल कर आया 25 से 30 छर्रे निकले. ऐसे में बहुत सातिर था, तो उसको एसटीएफ ने उसी अंदाज में धरा. लेकिन वो पुलिस से चालाकी दिखा रहा था या जबरदस्ती कर रहा होगा, भागने की कोशिश कर रहा होगा. ऐसे मुठभेड़ होता है. मुठभेड़ में वो घायल होता है बुरी तरह से. अभी वो जिंदा है या मर गया है, अभी वो जो जिला हॉस्पिटल है यानी मेडिकल कॉलेज भी है वहां पर बहराइच में, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
भी दोनों हैं, वहां से रिपोर्ट आएगी डॉक्टर का क्या कहना है, मृत हो गया है या अभी जिंदा है। लेकिन सरफराज और उसका सहयोगी पुलिस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हुए हैं और अगर सरफराज बचता है तो कहीं न कहीं यह जरूर बताएगा कि उसके साथ कितने लोग हैं और आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों उसने बंदूक निकाला, क्यों उसने And with that, we have more breaking news coming in. 5 accused have been arrested in the case so far, out of which 2 have been shot at while they were trying to flee to Nepal. That's the big breaking news coming in. Viewers, there is a big breakthrough in the case where we learned that 5 accused have been arrested in the case so far in the Bahraich violence, out of which 2 have already been shot dead, visuals of which we were playing for you on the screens. Sarfaraz, the main accused, has been shot. 5 accused have been arrested. That's the latest that's coming in. A big breakthrough by the UP police when it comes to Bahraich violence. Let's go across to Madhurima, who is joining us on the bulletin with more details. Madhurima, this is a big breakthrough that's coming in. A big success by the UP police. 5 accused have been arrested. What more details do you have on that? Well, Tanisha, we're learning at the moment that these are the 5 main accused in the matter, where multiple arrests have been made in the past week for vandalism and arson. These 5 accused are said to be the main people behind this entire murder case. And like you very rightly pointed out, Tanisha, that 2 of them have been shot at and have been rushed to the district hospital in Bahraich, like my colleague Raghavendra was pointing out. But yes, this is a big success for the Yogi government and the Yogi police and the Yogi kind of justice that we have been talking about ever since. It's been just a couple of days when the chief minister had met the family. He himself had gotten teary-eyed and had promised justice to the family, who kept on relentlessly asking for nothing but retribution. Tanisha. Right, Madhurima, stay with us. We'll go back to our reporter Raghavendra, who's joining us live from Bahraich. Raghavendra, आप जैसे हमको बता रहे थे कि जो अक्यूज थे वो नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त यूपी पुलिस ने ये एक्शन लिया है। 5 और लोग गिरफ्तार हो गए हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस बारे में? क्या वो 5 लोग भी साथी थे सरफराज के? क्या वो लोग भी नेपाल भागने की फिराक में थे? क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से जो एफआईआर लिखाई गई उसमें 6 लोगों का नाम था। सरफराज और उसके परिवार का नाम था, उसके पिता का भी नाम था। साथ ही पुलिस ने जो अपने तरफ से एफआईआर लिखा है, 10 और अलग अलग एफआईआर लिखी हैं, जिसमें काफी लोगों का नाम है और लगभग 54-55 लोग उठाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल पुलिस ने पूरी जो मॉनिटरिंग की, यानी जो सबूत इकट्ठा करने का जो काम किया, उत्तर प्रदेश एटीएस ने, जो एटीएस और एसटीएफ ने, दोनों ने मिलकर के कंबाइंड यहाँ पर ऑपरेशन किया है। कई अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर 5 लोगों को, यानी कि जो मेन आरोपी थे, उनके तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक, जिसमें से सरफराज जो मुख्य आरोपी है, जिसकी बंदूक लिए हुए छत पर एक फोटो भी रिपब्लिक भारत ने कल दिखाया था। ऐसे में वह मुठभेड़ में, अभी उसका मुठभेड़ हुआ है, वह घायल है, सीरियस है या मारा जाता है, वो डॉक्टर अभी डिसाइड करेंगे। लेकिन वो और उसके सहयोगी 2 पुलिस मुठभेड़ में इस समय घायल हुए हैं, ऐसी पूरी तरह से सूचना है। हरदी से नानपारा रोड होते हुए, चूंकि नानपारा रोड जो है नेपाल की तरफ जाता है, नानपारा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में था। कहा जाता है कि सरफराज का जो संबंध है नेपाल से पुराना है, वो बिजनेस भी करता है, साथ ही उसकी रिश्तेदारी भी वहीं पे है। तो नेपाल और ये बहराइच दोनों वो बराबर उसकी एक पहुंच थी आने जाने का। तो इस तरह से वो नेपाल भागने के फिराक में था। चूंकि नेपाल भाग जाता तो वो कहीं न कहीं नेपाल के माध्यम से और भी कहीं जा सकता था। चूंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, एटीएस, एसटीएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उसको ढूंढ रहे थे, चूंकि 5वां दिन था आज। 5 दिन से हत्या करने के बाद ये सब लोग फरार थे, अभी हाथ में नहीं आए थे। ऐसे में एसटीएफ के ऊपर काफी दबाव था कि हत्या करके कोई उत्तर प्रदेश में कैसे भाग सकता है, जहां पर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के लिए इस तरह की बीड़ा उठाए हुए हैं। ऐसे में शोभा यात्रा, यानी कि जो दुर्गा शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें कोई किसी की हत्या कर दे और हत्या करके फरार रहे, तो ये
देखिए कहीं न कहीं सवाल उठ रहा था एसटीएफ के ऊपर, एटीएस के ऊपर। ऐसे में जिस तरह की घेराबंदी की गई और एसटीएफ ने तो पूरा अपना डिजिटल प्रणाली उपयोग करके एसटीएफ के पास जो अपनी अत्याधुनिक जो जांच करने की जो पूरी मशीनरी है सब कुछ लगा दिया था। और आप देख रहे हैं परिणाम आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है कि आज पांचवें दिन जो मुख्य आरोपी है वो इस समय एटीएस के चंगुल में फंस चुका है। जी Right. Thank you so much, Madhurima and Raghavendra, for joining us and sharing those updates. We'll keep coming back to you. But for now, we slip into a very short commercial break. News and updates will follow. We are keeping on. We are tracking this top update coming in.